Hello students, in this video I am Kumar going to discuss part 4 of the book Classical Mechanics of class B.Sc part 3 Physics Honors courses of all universities. The topic to be discussed in this video will be derivation of Lagrange's equation of motion from Hamilton's principle. This is a very important topic for the examination point of view. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, और इसे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के स्टेटमेंट तथा डिडक्शन के साथ कंबाइन रूप से बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स पेपर्स के एग्जामिनेशंस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है. नाउ वी हैव टू डिराइव Lagrange's equation of motion with the help of Hamilton's principle. For it, suppose the Lagrangian function capital L, which depends on position coordinates, generalized coordinate qk, generalized velocity qk dat, and also on time t. So we can write Lagrangian L equals to L, which is the function of position qk, velocity qk dot, that is dqk by dt, rate of change of position or rate of change of position coordinate or generalized coordinate is generalized velocity, that is dq by dt, and possibly on time t also. This is equation number 1. But if Lagrangian L does not depend on the time explicitly, that is on t, then we can write L equals to L is a function of qk and only qk and qk dash only, not on t, because if we take Lagrangian does not depend on the time explicitly, then we can write it. अगर Lagrangian टाइम एक्सप्लिसिटी पर डिपेंड नहीं करता है तो Lagrangian को केवल सपोज किया जा सकता है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट qk तथा जनरलाइज वेलोसिटी qk डैश पर डिपेंड करेगा. तो इफ राइट डाउन, इफ द Lagrangian फंक्शन, if the Lagrangian function L, capital L, does not depend on time explicitly, then we can write Lagrangian function L equals to L, and it is a function of qk, and then it will depend only on generalized coordinate qk and qk dot, that is generalized velocity, if Lagrangian function L does not depend on time explicitly. तो उस सिचुएशन में L केवल Lagrangian केवल qk माने जनरलाइज कोऑर्डिनेट qk तथा जनरलाइज वेलोसिटी qk डॉट पर डिपेंड करेगा, जो कि जनरलाइज वेलोसिटी है, and qk is generalized coordinate, and this is equation number, suppose it is equation number 2. Now we have to take delta variation or differentiation on both sides. Then
delta in LHS it is delta L. In RHS it is since Lagrangian function L is the function of Qk and Qk dot, so sigma over we can write it as after differentiation or taking delta variation in LHS L variation of L, delta variation of L is delta L. In RHS sigma over K del L by del Qk partial differentiation in numerator and denominator, and then delta Qk. So we have sigma over K del L by delta Qk, del L by del Qk into delta Qk, del L upon del Qk, that is partial differentiation into delta Qk after taking delta variation on both sides, plus sigma over K del L upon del Qk dot into delta Qk dot. This is equation number 3. Now we have to integrate this equation, that is equation number 3, both sides between time interval t1 to t2, lower limit t1 and upper limit t2 as. So integrating both sides of equation 3 between the time interval t1 to t2, we have integral t1 to t2 delta L into dt is equal to integral t1 to t2 sigma over k delta L upon delta Qk into del L upon del Qk, that is partial differentiation in numerator and denominator both, into delta Qk, plus sigma over k del L upon delta Qk into del L upon del Qk dot into delta Qk dot into dt, and time interval t1 to t2. In first term it is t1 to t2 time interval, integration over the limits t1 and t2 sigma over k del L upon del Qk into delta Qk multiplied by dt also, because we are taking here integration. And in second term it is t1 to t2 integral over time t1 to t2 in time interval sigma over k del L upon del Qk dot, again partial differentiation in numerator and denominator, into delta Qk dot into dt. Taking delta variation out of the integral, we have delta t1 to t2 L dt equals to integral t1 to t2, lower limit is t1, upper limit is t2, sigma over k del L upon del Qk into delta Qk dt plus integral t1 to t2 sigma over k del L upon del Qk dot into dy dt of delta Qk into dt, because delta variation Qk dot can be written as d by dt of delta Qk, that is delta Qk dot is the time derivative of delta Qk. So we can write here in place of delta Qk dot as d by dt of delta Qk, that is time derivative of delta Qk.
Now we have to use Hamilton's equation because we are going to derive Lagrange's equation of motion from Hamilton's principle. So we have to use Hamilton's principle at any cost. And Hamilton's principle is delta variation integral t1 to t2 L dt is equal to 0, or time integral of Lagrangian between time interval t1 and t2 for a holonomic dynamical system is extremum. Extremum means a stationary, or extremum that is either maximum or minimum. So differentiation of constant is 0. So after taking delta variation, Hamilton's principle can be written as delta integral t1 to t2 L dt, that is time integral of, this is t1 to t2 integral t1 to t2 L dt is the integral t1 to t2 L dt is the time integral of Lagrangian. Since integral t1 to t2 L dt is extremum or constant, and so after applying delta variation, it is, or after differentiating it, we get delta t1 to t2 L dt equal to 0. So LHS becomes 0 in this case using Hamilton's principle. Using Hamilton's principle, we have delta t1 integral t1 to t2 L dt, that is time integral of the Lagrangian, and if variation delta variation is applied, that is after differentiation it becomes 0, because RHS is time integral of Lagrangian is constant or extremum. So taking differentiation or taking delta variation in both sides, RHS becomes 0, that is delta j, and delta j is extremum value or constant, and delta j is 0. So LHS of this equation becomes 0, and this equation we can write it as, suppose it as equation number 4. Now LHS of equation delta integral t1 to t2 L dt becomes 0 using Hamilton's principle. So we can write equation 4 as 0 equals to t1 to t2 sigma over k over generalized coordinate k del L upon del qk into delta qk dt plus, now we have to use integration by parts in the second integral of this equation number 4. So taking delta L by delta qk dot del L upon del qk dot as the first function, and d by dt of delta qk as the second function. इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज तब किया जाता है जब इंटीग्रेशन दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होता है. यहाँ पर दो वेरिएबल्स डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू के, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, एंड सेकेंड फंक्शन डी बाई डी टी, और सेकेंड टर्म डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के. तो फर्स्ट फंक्शन मान सपोज किया जाए डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू के डॉट, तो यह इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा और फिर डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, इसका इंटीग्रेशन होगा इस सेकेंड फंक्शन का. और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ. तो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा सेकेंड फंक्शन का. तो डी टी कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन
इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले चूँकि इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, हेयर द फंक्शन इज डेल्टा क्यू के, इज फंक्शन इटसेल्फ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू के हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू के, उसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, और बाद में टाइम इंटीग्रल T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के इंटू डी टी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के डेल्टा क्यू के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल, क्योंकि T1 टू T2 है, तो वह फंक्शन इटसेल्फ हो जाएगा डेल्टा क्यू के। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म में लिखा जा सकता है, सिग्मा ओवर के बाहर कर लिया जाए, डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इंटू, ये फर्स्ट फंक्शन है बाहर किया, और फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा क्यू के, और उसके पहले इंटीग्रेशन है T1 टू T2, तो इसलिए इसे अब लिखा जा सकता है फंक्शन इटसेल्फ डेल्टा क्यू के अब डिफरेंट इंटीग्रल का लिमिट, अब इंटीग्रेशन सिंबल हटाने के बाद ब्रैकेट दे करके T1 टू T2, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का यूज करने के बाद। और माइनस सेकेंड टर्म में माइनस होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, तो इंटीग्रल T1 टू T2। नाउ फर्स्ट फंक्शन जिसे सपोज किया गया, वी हैव टेकन डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट एज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का अब डिफरेंशिएशन लेना होगा, डी बाई डी टी ऑफ T1 टू T2 टाइम इंटीग्रल T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, और फिर अब इंटीग्रेशन, फिर एक और इंटीग्रेशन लेना होगा, यूज करना होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो इंटीग्रल का फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल हो गया T1 टू T2 डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट। अब सेकेंड फंक्शन का मतलब डी बाई डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक और इंटीग्रेशन, तो उसका रिजल्ट होगा कि डी टी कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, तो फंक्शन इटसेल्फ, और एक फर्स्ट इंटीग्रल के लिए भी डी टी से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सेकेंड टर्म बचेगा इसमें, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करने के बाद डेल्टा क्यू के इंटू डी टी, एक इंटीग्रेशन का यूज हो गया, माने जो सेकेंड इंटीग्रेशन था उसका वैल्यू हो गया कितना, डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल्टा क्यू के इक्वल टू फंक्शन डेल्टा क्यू के इटसेल्फ, केवल डेल्टा क्यू के बराबर होगा, डेल्टा क्यू के लिख दिया, और फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए डी टी है, इंटीग्रल जब भी होगा तो डी टी एक्स या एक्स के टर्म में होगा तो डी एक्स, थीटा के टर्म में है साइन थीटा तो डी थीटा, यहाँ पर डी टी, तो T1 टू T2 सिग्मा ओवर, और सिग्मा ओवर के हमने पहले ही बाहर ले लिया है ब्रैकेट के, बिग ब्रैकेट के, दैट इज अंडर ब्रैकेट। नाउ यूजिंग सेकेंड कंडीशन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, डेल्टा क्यू के वेरिएशन डेल्टा क्यू के इज जीरो एट द इंड पॉइंट्स, दोनों इंड पॉइंट्स सपोज किया था हम लोगों ने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में प्रीवियस वीडियो में, इंड पॉइंट्स पी एंड क्यू लिया गया था, तो वहाँ पर जो पाथ का वेरिएशन है डेल्टा क्यू के वह क्या होता है, जीरो होता है इंड पॉइंट पर। तो यूजिंग सेकेंड कंडीशन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल डेल्टा क्यू के इज जीरो, सो फर्स्ट ब्रैकेटेड टर्म इज मस्ट बी जीरो एज डेल्टा क्यू के इक्वल टू जीरो। So we will left with only integral in the last term of the bracket T1 to T2 d by dt of delta L by delta q k dot del L upon delta q k dot into delta q k into dt, and LHS is 0. Now interchange LHS into RHS and RHS into LHS, LHS को RHS में कर दिया जाए, RHS को LHS में, और we have integral T1 to T2 sigma over k del L upon del q k into delta q k dt
प्लस, अब जैसा कि मैंने कहा कि हैमिल्टन प्रिंसिपल के सेकेंड कंडीशन का यूज करने पर डेल्टा क्यू के इक्वल टू 0 एट द टू end points of the path between P to Q as the direct path and the neighboring path also. So at two end points delta qk is equal to 0. Therefore, first bracketed term will certainly equal to 0. So it is sigma over k integral. Now it is integral and minus, because first term is 0, so second term is negative, so plus minus minus sigma over k integral t1 to t2 d by dt of delta L upon del L upon del qk dot del L upon del qk dot partial differentiation into अंडर ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट के बाहर डेल्टा क्यू के इंटू डी टी. ये डेल्टा है और ये डेल है, ये पार्शियल है और ये वेरिएशन डेल्टा है, इक्वल टू 0. अब एल एच एस को आर एच एस में कर दिया, आर एच एस को एल एच एस में. नाउ और सिग्मा ओवर के को इंटीग्रल के बाहर कर दिया जाए और इंटीग्रल को भी कॉमन कर दिया जाए और डेल्टा क्यू के डी टी भी कॉमन है. तो वी हैव t1 टू t2 सिग्मा ओवर के, दोनों टर्म में है तो इसको कॉमन कर दिया जाए और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में अंडर ब्रैकेट लिया जाए और डेल एल अपॉन डेल क्यू के माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट. अब दोनों इंटीग्रल में डेल्टा क्यू के डी टी और डेल्टा क्यू के डी टी, तो इसको भी कॉमन कर दिया जाए जैसा कि हम लोगों ने इंटीग्रल को दोनों टर्म में इंटीग्रेशन है बिटवीन टाइम इंटरवल t1 टू t2 एंड सिग्मा ओवर के भी, तो उसको हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर कर लिया कॉमन. उसी ढंग से डेल्टा क्यू के इंटू डी टी दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो यह भी इसे भी कॉमन लिया जा सकता है. तो इसको ब्रैकेट के बाहर आर एच एस में, इसको ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में आर एच एस में 0 होगा, तो ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में इसको कॉमन ले लिया जाए, डेल्टा क्यू के डी टी इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ द वेरिएबल्स और वेरिएशंस delta qk are independent only if the integrand or the bracketed term is 0. जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसे इंटीग्रेंट कहा जाता है. तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इंटीग्रेशन का, तो उसको इंटीग्रेशन सिंबल के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको इंटीग्रेंट कहा जाएगा. तो यहाँ पर डेल्टा क्यू के जो कि वेरिएबल्स है या वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू के, तो डेल्टा क्यू के आर इंडिपेंडेंट ओनली इफ द इंटीग्रेंट that is term inside the bracket must be equal to 0. So variations delta q के variations delta q के are independent if the integrand is 0, that is del L upon del QK minus d by dt of del L upon del QK dot equals to 0. मतलब इंटीग्रेशन के ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है इंटीग्रेंड वह 0 होगा, तभी जा कर के वेरिएशंस डेल्टा क्यू के इंडिपेंडेंट होगा. सो वेरिएशंस डेल्टा क्यू के आर इंडिपेंडेंट इफ
del L अपॉन del Q के माइनस डी बाई डी टी ऑफ del L अपॉन del Q के डॉट इक्वल्स टू 0. That is integrand becomes 0. Or we can write finally as dy dt of delta L upon delta Qk dot minus delta L upon delta Qk and RHS is 0. So this is the final equation dy dt under bracket delta L upon del L upon del Qk dot minus del L upon del Qk equals to 0, and this is called Lagrange's equation of motion. This is final equation 6, and this is Lagrange's equation of motion. इसी डेरिवेशन के साथ दैट इज लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन का हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल्स डेरिवेशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.